Aditya Singh, who has a congenital heart disease called EMF, and which is the fibrosis of the heart. And his mother always tells him to go and get a heart transplant. He always told his mother that he doesn't want to get a heart transplant until he goes for a business meeting to Dubai and meets this beautiful girl there and falls in love with her. And she changes his life, changes his decision. Now he wants to live, and he goes back home and talks to his friend, played by Sam, about heart transplant, and he finally goes for one. And while he is on the operation table, he goes to this rare phenomenon called anesthesia awareness, where he is bodily paralyzed from outside, but from within he is awake. He can hear everybody, he can feel the pain, but he can't shout for help. And whether Aditya Singh comes out alive or not, and the film turns out to be this really emotional mother-son film. In the end, that's the character. Approached me for the role 3 years back, and I remember I was out somewhere and he called me. He wanted me to come home. कि जल्दी खड़ा हो, एक role है, एक script है दिमाग में. And I came back home and I remember it was 5 o'clock in the morning, and he didn't let me sleep the whole night. And he was telling me, and I was really excited because it's a new subject that people haven't seen before, never heard of before. It's the first romantic medical thriller of India, and I can't thank him enough to give me a role like this. It is an outstanding role, and I hope that when people watch the film on the 7th of Feb, they feel the same way about me. बहुत हॉरिबल था, बहुत ही खराब डायरेक्टर है ये. नहीं, डायरेक्शन आती ही नहीं है. कितना रीटेक रीटेक तो आपको इनसे पूछना पड़ेगा. मैंने कितनी तकलीफ इन्हें दी एज एन एक्टर, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 3 साल पहले जब वो डायरेक्शन की बात की थी उन्होंने मुझसे, तो मैंने ये कहा था कि जब वो फिल्म बनाएंगे तो वो हमारे देश के वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्टर्स में से माने जाएंगे. और मेरा ये मानना है कि जब 7th फेब को लोग देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिज डायरेक्शन इज जस्ट आउटस्टैंडिंग. इट्स हिज फर्स्ट फिल्म. टू चूज अ सब्जेक्ट लाइक हार्टलेस, ही कुड हैव चोजन एनी सब्जेक्ट वेयर इट्स अ कमर्शियल फिल्म जहाँ पे 6 पैक्स गाड़ियाँ लोग उड़ रहे हैं, वो सब. ही डिडंट डू एनी ऑफ दैट, एंड टू चूज सच अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट एज हिज फर्स्ट फिल्म इज कमेंडेबल, एंड टू प्रूव दैट ही he's done such a good job. And I really hope कि लोगों को भी यही लगे जब फिल्म. खराब एक्ट्रेस है, एक्टिंग नहीं आती है नहीं, बट she was outstanding. I mean she's been my friend for a very long time. और न्यूयॉर्क में जब पढ़ता था तो इन्होंने मेरे लिए एक शॉर्ट फिल्म की थी, और at that time also she told me I don't want to do the film and I'm not an actress and this and that, and she did a commendable job because उस फिल्म में डायलॉग्स ही नहीं थे. And I came back to Bombay, and of course we started planning for Heartless after a couple of years, and we wanted an actor, and he couldn't find a girl after auditioning so many girls until he remembered that he had seen her audition tape, and then he spoke to her, and she didn't want to do the film, but because she thought she won't be able to do the film, but she didn't know who she was working with. He can make a rock work, rock act, but she has done an amazing job in the film. I had an amazing experience working with Shekhar ji, with Atyan, and I'm very fortunate that Shekhar ji had given this opportunity to me. It was an amazing experience. I'm very grateful to Shekhar ji, to Atyan. I've got to learn so much through this film, and I'm very grateful to Shekhar ji, who had asked me to do the role. It's an amazing role. It's really tough, and it was a strong role. I think every character in this film has a strong role, strong character. So You had an amazing experience. It was wonderful. ठीक कहते हो, तुम्हारी जिंदगी में आने वाला कल नहीं है और मेरी जिंदगी में है. जानते हो क्यों? क्योंकि तुम जिंदगी को सालों में गिनते हो और मैं लम्हों में. मैं हर पल जिंदगी के इंतजार में गुजारती हूँ और तुम मौत के. तो एक पल के लिए ये मत सोचना कि तुमने ये रिश्ता मेरी खातिर तोड़ा है. तुम में जिंदगी जीने की हिम्मत नहीं है. तुम बस ये बहुत बड़ी बात होती है for someone who has come from America, जिनको भाषा का ज्ञान नहीं. सही बात. और मुझे तो लगा आप लोग कैमरा फेंक के तालियां बजाएंगे. उसके बाद कुछ आया नहीं रहा. और यहाँ की लड़की को जब मैंने ऑडिशन किया तो वो 1-2 लाइन के बाद तप्पम फप्पम पप्पम सब लाइंस भूल जाती थी, और बाहर की एक लड़की आके इतने खूबसूरती से उसको अडेप्ट कर लेती है और फिर तरीके से बोलती है, और शूटिंग में कोई तकलीफ नहीं होती. आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि एक एक्टर जब भाषा में उलझ जाता है, लैंग्वेज को मास्टर करने की कोशिश करता है, उसके परफॉर्मेंस निकल जाती है. यहाँ दोनों चीज़ें भाषा को समझ के सिर्फ रट के बोल नहीं रही थी,
समझ के उसको बोल रही थी, समझ के परफॉर्म कर रही थी, उसमें परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क आता है। नहीं तो आप लोग बहुत लोगों को देखेंगे या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर जाते हैं, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वो ABCD 1 2 3 4 5 डायलॉग्स नहीं बोल पाते, तो यही बोलते हैं, बाद में उसकी डबिंग कर दी जाती है, तो परफॉर्मेंसेस में बहुत असर पड़ता है। बट हियर वाज समवन हु एक्चुअली मास्टर्ड द लैंग्वेज, और उन्होंने पूरी जी जान से मेहनत की, और उसका आप फल देख सकते हैं। Honestly speaking, not really. I've seen a couple of his episodes, and I've used to watch a lot of Indian films also. So I've seen his first film with Rekha Ji. I think वो किसने it नहीं was देखी है? amazing. But yeah, I've seen his film, and of course I knew who he was. I like the way you asked it. Good question. हाँ, You know, at first, I didn't know what to say, if I should say yes or no, because I've never thought about acting, coming to India, becoming an actress. When Shekharji had asked me to do the role, I didn't think he was serious, but then without thinking, I had full trust in him, because of course, you know, knowing Shekharji, he's an amazing director. He knew exactly what he wanted when he had talked to me about the character, about the film. It really convinced me. I said, sure, I'll definitely do it. And when I came here and I read the script, I thought it's brilliant. I'm glad I said yes. It's a big Yeah. it's a big struggle. Yeah, as a- It was a big struggle for me to find the real girl, but she didn't have to struggle. But she didn't want to become an actress. Now the point is कि she never had an ambition to become an actor. Yeah. So the struggle to become an actor वो था ही नहीं कभी. It's just that I had to convince her to be a part of my film, and now she's convincing me to be a part of my second film with that. So you know, she has really enjoyed being a part of the film industry and being a part of Heartless, because यहाँ पे usually नई लड़की को ऐसा रोल ही नहीं मिलता है where it's so strong, इतना character इतना strong था. But when you watch, कितना भी मैं बोल लूँ how good she is, you have to watch what work he has taken out of her in the film to watch that. बिल्कुल, चैलेंज में ही तो, चुनौती में ही तो मज़ा है। अगर आप किसी मंजी हुई एक्ट्रेस को अगर आप ले आएँ और वो एक रोल दें तो अच्छा कर लेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें कुछ नयापन नहीं होगा। कई जगह क्या है, लोग काम करते करते इतने अच्छे हो जाते हैं कि कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते, वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं। इसीलिए, और स्पेशली इस किस्म की फिल्म, और फिर जब आप पहली फिल्म बना रहे हैं तो कोई एक बड़ी स्टार को ले, उनके नाज नखरे, उनके वैनिटी वैन से लेके उनके मेकअप, उनके हेयर ड्रेसर, उनके फर्स्ट क्लास टिकट, और ये सब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं गरीब डायरेक्टर हूँ और इसलिए मुझे बहुत ज़रूरी था कि मैं बगैर एक टैंट्रम थ्रो करने वाली एक नई हीरोइन को लूँ, और वो कोई भी हो सकती थी। ये इनकी किस्मत में था कि मैंने फिल्म देख ली, या शायद मेरी किस्मत में था कि मुझे इन्हें मेरी फिल्म में काम करना था। विच एवर वे इट हैपेंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म, इट हैपेंड फॉर गुड। तो चुनौतियाँ थीं, बैठ के कई दफ़ा इनको सीन समझाने में शायद थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता था, हिंदुस्तानियों को कम लगता क्योंकि उनको भाषा ज्ञान है, लेकिन परिणाम अगर अच्छा हो, नतीजा अच्छा हो तो 100 खून माफ़ है। और मैंने बताया कि बहुत मेहनती हैं और बहुत पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ इन्होंने काम किया। तो चुनौतियां आई ज़रूर, लेकिन उन्होंने भी इसको स्वीकारी और मैंने भी उसको स्वीकारा, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जो चयन किया उसमें कोई गलती नहीं।